तो एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक पत्नी पति को पीट रही, जो कि ये नहीं है कि पत्नी पति को पीट रही थी। पड़ोसी बोला, क्यों मार रही हो? वो जवाब देती है, जब भी इनको फोन लगाती हूँ एक ही आवाज आती है, जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं वो इस समय व्यस्त है। With this we move to our another speaker, Sachin Dedia. My friend Dr. Pinky Bansal will introduce him. We now have with us Mr. Sachin Dedia, who is an independent cyber crime investigator and also a critical ethical hacker. The word itself is a little difficult for us, isn't it? As Kenya has just said that there is nothing like ethical hacking. So I think I should term it as permitted hacking. Mr. Dedia, is it correct? Since many years he has been working as a cyber crime investigator and also as a security expert with IT companies, government departments, corporate and even individuals. He has also provided training to Navi Mumbai Cyber Cell Department and is also assisting Cyber Cell Department of Mumbai Police with respect to their queries. Anybody has any matters in New Mumbai, please contact him. This past few years, he has been successfully conducting various seminars and workshops across numerous schools and has covered almost all colleges in Mumbai University, various chartered accountant study circle meetings, various Rotary clubs, hospitals and even government departments. He has successfully conducted 500 seminars and workshops across India and enlightened 50,000 participants. Technical abilities span a very wide range of technologies across networks, operating systems, web servers, and cyber forensics. However, his specialization is network security, cyber crime investigation, and developing Python programming based script for exploits. This word itself is as big as a Python. May I please request him to enlighten us on how things work? Okay, hello everyone. So now we start with a very crisp but interactive session. I'm going to ask you a lot of questions and I would like you to respond. Okay. How many of you are using Android based phones? Okay, quite a lot. How many of you are using iPhone? 1, 2, 3. Okay. How many of you are using BlackBerry? Okay. And how many of you are using Nokia? Don't laugh, okay? Because some people start laughing during Nokia, तो जिनके पास होता है बेचारे हाथ भी नहीं ऊपर करते हैं. So that is what generally the trend is, you know. So I just we all use it. You know, just if you listen to my resume, I've been doing this since the year 2010 and 11. In 2010 and 11, my first question used to be, you know what? How many of you are using Nokia? Then I used to do reverse direction. Then how many of you are using BlackBerry? Then iPhone to hardly, you know, तभी तो लोग तरस से थे कि भाई कोई iPhone वाला है कि नहीं है. But who is the big personality who is using iPhones? Now all of you got accounts over here on Facebook, right? And how many of you use a very wonderful application by the name of WhatsApp? Almost everyone. So any one volunteer who would like to come over here and open his or her account on Facebook. Any one volunteer. Before you come, I'd just like to tell disclaimer because it's been a lawyer's thing. I'm going to tell you the first step towards, you can say, security or hacking. I'm just going to show you how you can find out anyone's Facebook account's password in less than 3 minutes. If you can understand this step, this is also one of the steps to go and hack into your neighbor's Wi-Fi. अगर बाकी वाले Wi-Fi अपने में use करना होगा तो this is also one of the steps. Now if you want to come then. Just don't share it publicly by password. That is what I'm going to say. Your ex-boyfriend's name. See, that is what I'm going to show you, man. That is what I'm going to let the public know. So any of the volunteers? Anyone? Maybe I should give a disclaimer later on. So anyone volunteer? Anyone? Come on, yes, phone late. You can try yours. Yes, phone. I have got multiple accounts, ma'am. Come, anyone? Okay, mine. Come here. No, come here. I will just open. We will just let the public know. So, yeah. Okay, now see. First step. What we need to do, we bring the mouse over here in the password field. Okay. Then we do something known as what? Right click. We see a lot of options opening up. Can you see the last option over here? Then read the name of the option. Inspect the element. We just go over there. Click on that. You'll see a blue highlighted line opening over here. Can anybody give the name? Input type is equal to password, class as your input text. What you need to do, double click on password, just change it to, you can say text,
press enter, look at the password over there. Can you see the password field now? I hope you understood. You want me to repeat? Yeah. You note down, okay. Okay, this is applicable to almost anyone, anything over here. So, okay, so any more volunteers for Gmail or any other thing, please? Okay, yes. So just as Ma'am suggested, I'm going to use one of my accounts over here to open. Okay, now everybody just please tell me the steps. Now, bring the mouse in the password field. See, for a non-technical person, bring the mouse in the password field. This will work on your Gmail, this will work on your Outlook, this will work on your Twitter, net banking, anything. So people who have a very wonderful habit, remember me करके password save करके रख देते. For this is a very beautiful trick to take out the password. Now tell me the steps. Sachin, I have a question. The condition and the session is there. हाँ, tell me the steps now. The cursor on the password and Right click, then last option, inspect diamond, perfectly right. Then what do I change over here? Password to yes, perfectly right. I wonder why he told me to repeat. Everybody was giving the answer in chorus only. But anyways, see, I hope you are understanding. This is like the first step towards security, hacking or whatever you can. Correct. But this step will work well when somebody has kept remember me as a part of their password. What are the next steps if you don't know the password? If somebody is not given in the password, forget password. Okay. Or if I know only the username, then how to take out the password. If I know only the Facebook ID, the Twitter ID or the LinkedIn ID, then how to take out the username and how to take out the password. See, these are the next steps. Okay. But over here today, we are going to be satisfied with only the first step. I hope you are understanding. Okay. Then, simple. When I talk about phishing attack, okay, there's something to do with we want the second step also. second step. Okay, second step. So let's see if I got how many of you got accounts. Now we go with a little serious. Facebook को तो मजा नहीं आएगा. We go with what? State Bank of India. How many of you got accounts with the State Bank of India? Anyone? अरे यार अभी कोई हाथ ही नहीं ऊपर करने वाला. मतलब ऐसा लग रहा है कि even if I say that then people will even raise their hands, right? Okay. Okay, how many of you got accounts in the State Bank of India? How many of you got accounts in the ICICI Bank? अरे कोई तो बैंक में अकाउंट होगा. Any bank you tell me, I'll open that bank account for you. Yes, right. Yes. Yes, bank. ICICI? Okay, ICICI. ठीक है. So I'll open both the accounts for you. Okay, we'll start with SBI first. This is what? SBI, right? और कौन सा बना? ICICI भी चालू करते हैं. Okay, ICICI पे आ गया ना? Right. This looks like what? A fake page of State Bank of India. But if I open the main page of State Bank of India, actually even I don't know what is the main page of this, but the URL of that particular thing. So what I'll do, SBI India. So here it is. Now look at this page. If I go into the net banking login, where is it at? Same time, wherever that login is, it will be the same page as this page. Now what people generally do is, they will click on what? Continue to log in. So you get this username and password. Can you see this over here? Then people say, Sachin, use virtual keyboard. People say use virtual keyboard, it is very, very safe. So what I'll do, enable virtual keyboard. Then I'll put in my username over here, 00, I'm sorry, I'll put the username first. Suppose whatever username I'm going to put. Then I'll put what? Password. I'll remove this password and I'll put this. I hope you understand it. Look at the URL, this is my hosted URL. Then I'll put on what? Login. Now here comes the most tricky part. As you click on login, it will say there is a problem with your login, please try again. So you assume that you have put in the wrong password. Then it will redirect you to the original page of SBI. So then you will put in the username and the password. And you will not even like. But I will get the original username and password of your bank account. So I'll just see this over here. Once I click on login, you see this, there was a problem with your login, please try again. I click on OK. Now look at the URL now. Can you see this? This is now the actual bank's URL, which was the same as mine. And then you again click on what?
continue to log in. Then you again click on what? Enable virtual keyboard, and everything is going to be the same. But here in my hosting space or in my server, I'll go into my folders. State Bank of India I went into, right? And retail banking. So report. And if I click on this, जितने भी लोगों ने अभी तक पासवर्ड डाला होगा सबका आ गया होगा, मतलब anyone. Can you see this? The date over here. Sorry. Can you see the last date? 8/3, Women's Day. Session successful. And the time. I hope you are able to understand. ऐसा मैंने सभी बैंक का बना के रखा है. ICICI है, State Bank है, any bank that you have, you let me know and we can do it for you. This kind of an attack is known as what? A phishing attack. इस टाइप के अटैक को क्या बोलते हैं हम लोग? फिशिंग अटैक बोलते हैं. Where people actually do not pay attention कि भाई ऊपर क्या है. I hope you understanding. आपको एक लिंक आएगा. Please update your bank account. Your debit card account has been withdrawn or this and that and everything like that. As per the rule of RBI, as per the SEBI's rule, this and that, and you will have to click on. You have not changed your password for the last 15 days. Here is your bank statement. Download a bank statement. People don't pay attention. They will click on the link. That link will actually be redirected to some people like us who have been. But what will you see? You know, it is always said, a person sees what he wants to see. You know, और उनको क्या दिखना चाहिए? Page. We are used to seeing this page day in day out. Formally we are using net banking and debit cards and credit cards. We'll see this. We put the username and password, and people like us get the actual username and password. I hope this is very clear. The first rule that you need to remember is you have to ensure that in the URL what you are going to get is the exact thing and not the local host, some of the other. I hope this is very clear. Okay, now we begin with one more thing. How many of you have got? How many of you use debit card? How many of you using credit card? Okay, how many of you use a debit card and credit card outside an ATM? ATM के बाहर use किया है? You know, departmental store, grocery store, movie theaters and everything like that. So अभी पता है as per the rule of RBI, you're supposed as soon as you swipe your debit card or credit card, you're supposed to put in your what? PIN number. How many of you put in your PIN? Excellent, everybody. So all of you now become a potential victim or clients. Future में कभी ना कभी आप मेरे पास आओगे. Reason is, I'll also tell you, maybe you can come as a client or you can come as a victim. Either of the two. One of the main reasons how you are going to come is that, see, just as sir has explained, there's a very simple device known as a skimmer. Okay, now I'll just explain. In Kolaba, I mean in Churchgate or near Nariman Point, I'm just taking a brand new shop right now. I found an investor. So what I'm going to do is within 3 months you will see a very good store opening, which will be giving branded goods for sale. I mean branded goods means Samsung phone, iPhones, Reebok shoes, Adidas shoes, all branded shoes, discounted price. If Amazon is selling that Samsung phone for 50,000 rupees, in my shop it will be available only for 45,000 rupees. कुछ भी होगा, किधर भी होगा ना, available only at less at my price. But only on one condition you can buy from my shop. You have to pay by debit card, only by credit card. No cash, no check is allowed. Do you think people will come? Obviously people will come. Because in India कुछ भी free में दोगे ना, एक बार public आएगा ही आएगा, right? And what will happen is that you will select your store, you will select your this thing. You will come to my sales counter. Okay, near that particular thing. My sales girl will be standing over there. Now assume this be the swiping device. This is my shop. Yes Bank and Citibank is giving me this device, the swiping device for 15,000 rupees. 15,000 रुपए का एक मिल जाएगा. और मेरा खुद का device है. Then there is a software or a hardware known as what? Skimmer. Skimmer नाम का जो भी सर ने बताया. 10,000 से 50,000 रुपए की रेंज आती है. Skimmer नाम का सॉफ्टवेयर क्या करेगा? मैं इसके डिवाइस के नीचे डाल दूंगा. What does basically Skimmer do? It creates a clone. आपके पीछे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का जो भी वो स्वाइप रहता है ना, उसका जेरोक्स बना देता है. स्कीमर अपना पूरा डिटेल उसके अंदर रख देगा. अभी क्या होगा, जैसे आप दुकान में मेरे पेमेंट करने आओगे ना, मेरी सेल्स गर्ल आपको क्या बोलेगी? डेबिट कार्ड आपको देगी या क्रेडिट कार्ड आप उसको दोगे, वो आपके सामने स्वाइप करेगी. फिर आप लोग क्या डालने जाओगे? पिन. अभी मेरी सेल्स गर्ल आपको क्या बोलेगी? सर, मैडम, प्लीज वेट, प्लीज डू नॉट पुट द पिन इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे सामने आपका पिन मत डालो, कहीं हमने आपका पिन देख लिया तो. और ऐसी गलती किसी और के सामने भी मत करना. प्लीज डू नॉट पुट द पिन इन फ्रंट ऑफ अदर्स. और वो क्या, मेरी सेल्स गर्ल थोड़ी पीछे चली जाएगी और आप लोग को लगेगा कितने शरीफ लोग हैं, कितने लॉयल इंसान हैं, कितने ऑनेस्ट हैं इन लोग कि हम लोग को सलाह भी दे रहे हैं कि दूसरे के सामने पिन नहीं डालने का. वो पीछे गई, आपने पिन डाला, आप कुछ लेके चले गए, राइट है. अभी एक्चुअली क्या होता है कि आपने स्वाइप किया. नाउ व्हाट आई वुड रिक्वायर इज अ ब्लैंक मैग्नेटिक कार्ड.
टू कॉपी योर थिंग। तो अपना बाजू वाला नेबर, ऊपर वाला बड़ा कंट्री, वो 50 रुपए का एक कार्ड देने के लिए रेडी हो गया है। 50 रुपए का एक बैंक पेनल्टी कार्ड विद बैंक मेंबरशिप देने के लिए रेडी हो गया। ऐसे मैंने 300 सैंपल पीसी मंगाया। कितने? सिर्फ 300 एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 300 मल्टीप्लाई में 50 करूंगा, 15,000 रुपए का वो खर्चा, 15,000 रुपए का ये खर्चा, 50,000 रुपए का वो स्कीमर का खर्चा। जहां जाके इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है मेरा? 80,000 रुपीज। वो मेरी सेल्समैन पीछे क्यों जा रही है पता है? ताकि बैंक पेनल्टी कार्ड ड्रॉ में से निकाले। आप कार्ड स्वाइप करके चले गए, वो बाद में क्या स्वाइप करेगी? ब्लैंक मैग्नेटिक कार्ड स्वाइप करेगी। तो आपका कार्ड का जो मैग्नेटिक डिटेल था, आपने स्वाइप किया था पहले, वो स्कीमर ने पकड़ लिया, आप चले गए, फिर ब्लैंक मैग्नेटिक कार्ड स्वाइप किया तो स्कीमर ने क्या किया? वो कार्ड का डिटेल ब्लैंक के अंदर डाल दिया। फिर बचा क्या आपका लेने का? पिन। तो पिन तो क्या, अगर आपकी दुकान मेरी है, 5 ऊपर इंफ्रारेड कैमरा रखने वाला हूँ। इंफ्रारेड कैमरा होंगे उसके ऊपर, एकदम ऊपर, एक एकदम ऊपर, एक लेफ्ट, एक राइट, एक नॉर्थ, एक साउथ, 5 साइड से आपका पूरा पिन कैप्चर हो जाएगा। फिर शाम को 6 बजे जाके एसी रूम में बैठूंगा, कंप्यूटर पे टक्कर करूंगा, एक कटिंग चाय पीऊंगा और फिर देखूंगा किसका फेस थोड़ा अच्छा लग रहा है, किसका ज्यादा बैलेंस है। और फ्रॉड आज नहीं करूंगा। आज है मार्च, 8 मार्च, तो फ्रॉड होगा आपका जून एंड जुलाई एंड के टाइम पे। क्यों? जुलाई एंड में अगर आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर फ्रॉड है तो आप ये सोचोगे कि पिछला 5 ट्रांजैक्शन आपने किधर किया था। ये सुनो, क्या ये याद आएगा कि मार्च के महीने में आप मेरी दुकान पे आके इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करके गए थे? नहीं। तो मुझे पक्का यकीन है अगले 3, 4, 6 महीने तक कोई भी अपना पिन बदलने वाला नहीं है। कोई यहाँ पे इंसान जिसने पिछले 6 महीने में अपना पिन बदला होगा? नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे को तो पक्का यकीन है थोड़े बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे तो बैंक का जो पिन अभी तक चला पाते हैं। कैसे नहीं? बैंक का जो पिन होगा, पर्ची पे आपने पाना होगा, तभी से लेके अभी तक का वही पिन चालू रखा होगा। Which means, can you imagine what kind of dangers you are facing? Lot of people, you know, when you go to this very good. I've been to JW Maritime and conducted a lot of these various seminars, where I conducted a lot of one-to-one meetings with very high-profile people. You know, when I see in restaurants, very few people have this very wonderful habit. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के कोई पेमेंट करना है, इसको लाइक नॉर्म। कार्ड देते हैं और बेटे को बोलते हैं 3789 डाल देना। बोला वाह, वेरी गुड। आजू बाजू वाले टेबल वाले को भी पता चल गया कि उसका पिन नंबर क्या है। तभी तो मैं मीटिंग वाले को बोलता सर प्लीज एक्सक्यूज मी 1 मिनट, आई गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेरी गुड अमाउंट। मैं बेटे के पीछे बात करता हूं, बोलता हूं क्या नंबर बोला था उसने? 3789 ना, ये ले 500 का नोट, मेरे को 2 मिनट के लिए क्या दे? कार्ड दे हाथ में के लिए। 500 मिनट में तो कोई भी वेटर गिरा होने वाला है और कार्ड मेरे को मिल जाता है। बचा क्या है मुझे उसका लेने का? पिन। वो तो पूरे बोला मेरे को पक्का यकीन है वो 3 महीने के बाद वही क्लाइंट को इधर ही बुलाया था, मिलेगा मैं लोड किया, मैं बर्बाद हो गया क्योंकि किसी मेरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का अकाउंट का हैक कर दिया था। राइट, दिस इज वेयर पीपल आर गोइंग टू बिकम द विक्टिम्स। नाउ सिंस वी आर वुमेन्स डे, व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस इज ऑन वन lot of cases which we get, and I really mean a lot of cases which are not coming to you also, and I see as a woman, you know, बहुत सारे केसेस ये आपको भी नहीं आते, लॉयर तक भी नहीं पहुंचते, पुलिस तक भी नहीं जाते, लेकिन हम लोग जैसे लोगों के पास बहुत आते हैं, जो हम लोग ये सब सेमिनार देते हैं ना, स्कूल लेवल, ग्राउंड लेवल, मतलब बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आजकल हर एक लड़का या लड़की, स्पेशली गर्ल्स को एडिक्शन, ऑब्सेशन हो गया है एक चीज का, क्या? सेल्फी। परफेक्टली राइट। सेल्फी के अलावा तो उनका खाना हजम नहीं होता, और ये प्रूव करके बताते हैं उन लोग। आज फेसबुक के ऊपर जाके ऐसे देखेंगे ना, कोई नए रेस्टोरेंट में गए ना, तो पहले फेसबुक के ऊपर रेस्टोरेंट पे टेबल का जो खाना है ना, पहले वो पिक्चर अपलोड होता है, मतलब तब तक यकीन हो जाता है कि जब तक फोटो निकाल लेते तब तक तो खाना खाया नहीं है। फिर क्या होगा पता है? पहला जो बाइट जाएगा वो बाइट का सेल्फी आएगा और वो जाएगा ट्विटर के ऊपर, मतलब तभी भी पेज पे खाना गया नहीं है। मतलब फेसबुक और ट्विटर के ऊपर जब तक खाना नहीं पहुंचता तब तक पेज के अंदर पहुंचने वाला नहीं है। राइट, so what I request all the girls, you know, who are in this addiction of doing a selfie, posting of their photos, videos, all of these things, और फेसबुक पे आप कितना भी अच्छा प्राइवेसी सेटिंग्स पूरा कर लो, इंस्टाग्राम में कुछ ना कर लो, इट इज गोइंग टू नोट टू द वर्ल्ड। ऐसे ये सोचता भी नहीं है कि क्या कोई मेरा डेटा लेके जा रहा है। कितने लोग मेरे को आके बोलते हैं कि सचिन आई हैव इंस्टॉल्ड वन एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ ट्रू कॉलर। पता है आपको ट्रू कॉलर क्या होता है? हैव यू हर्ड इट? विल इट टेक आउट माय डेटा? कितने लोग आके बोलते हैं कि सचिन आई हैव इंस्टॉल्ड दिस एप्लीकेशन, विल इट टेक आउट माय डेटा फ्रॉम माय एंड्रॉइड फोन? आई हैव इंस्टॉल्ड वन एप्लीकेशन ऑन माय कंप्यूटर, विल इट टेक आउट माय डेटा? व्हाट शुड यू आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? परमिशन में नहीं लिखा कि आपका डेटा नहीं लेके जा रहा, फिर क्या बोलोगे? परमिशन में नहीं लिखा। एक्चुअली अभी तक लाइफ में किसी ने कोई भी यहाँ पे एग्रीमेंट पढ़ा है? नहीं, मैं मतलब सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद एग्रीमेंट आता है ना, वो वाला एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। एग्रीमेंट पढ़ भी लेंगे तो अच्छे खासे लॉयर को भी समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। हम लोग एग्रीमेंट पढ़ भी लेंगे तो इसमें क्या चेंजेस कर पाएंगे? आई एक्सेप्ट, आई एग्री करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, जब तक कि डेस्कटॉप के ऊपर आइकन दिखता नहीं है, जब तक फोन के ऊपर आइकन नहीं दिखता। लेकिन इंडिया में ना एक चीज बहुत अच्छी है,
See, we should go off to sleep very very peacefully in a very calm manner. ऐसे सोचते का भी नहीं कि कोई मेरा डेटा लेके जा रहा है. इंडिया का पूरा डेटा जा चुका है, जा रहा है और फ्यूचर में जाने ही वाला है. ऐसे लोग ऐसे सोचते का नहीं. Do not worry, do not be so bothered कि कोई मेरा डेटा लेके जा रहा है कि नहीं. अरे 12-13 लोग लेके जा चुके हैं और दूसरे को लेके जाने दो, कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है. This is India. We are here to take out our data. It is been taken out in future also. It will be taken out itself. Like few people will tell on the page that we are taking out the data. Few will not tell. But the main reason is not they will take out our data. Facebook क्या है? Facebook है. Front page के ऊपर होता है कि मैं आपका डेटा लेके जा रहा हूँ. Front page. Yes. Like you see this, read these 2 lines over here. By clicking create an account, you agree to our terms and that you are our, including our. अभी किसने पढ़ा है? डेटा पॉलिसी तो बहुत दूर की बात है क्योंकि यूजर तक तो पहुंच नहीं पाओगे. पहले नहीं पढ़ा, दूसरे काम तक पहुंचेंगे लोग. फेसबुक क्या करता है पता है? फेसबुक क्या बोलता है कि as soon as one user logs inside my Facebook account, it will inject one cookie in the browser. So it will start seeing all the activities happening in your browser. बाजू के टाइम में अगर आपने Gmail खोला, Facebook को पता चलेगा आप Gmail में क्या कर रहे हो. बाजू के टाइम में नेट बैंकिंग ओपन किया ना, Facebook को पता चलेगा आप नेट बैंकिंग में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो. लेकिन क्या था ना, आज घर पे जाके खाली एक्सपेरिमेंट करना. क्या करो, फेसबुक का अकाउंट खोलना है सर, ठीक है. बाजू के टाइम में क्या ओपन करना पता है? गूगल ओपन करना, लाइक दिस. फिर आप ये सर्च मारना, क्या पता है? गोवा हॉलीडेज. व्हाट विल यू सर्च? गोवा हॉलीडेज. नो, गोवा हॉलीडेज. यू सर्च लाइक दिस. आगे सर्च. फिर क्या करो पता है? नीचे जाके ऐसे ना राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करना. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऐसे 3-4 टैब ओपन करना, उनको खुलने देना, आप विजिट करना थोड़ी देर के लिए. Spend 2-3 minutes on a few pages and mark my words. After 3 hours or after 1 day, the only ads that you're going to go and see on Facebook the next day will be what? No, गोवा हॉलीडेज ही आने वाला है. लेफ्ट राइट सेंटर आपको गोवा के हॉलीडेज के ऐड ही भेजने वाला है. इनफैक्ट इतना ऐड भेजेगा ना, आपको गोवा भेज के ही छोड़ने वाला है. राइट? हाउ डज फेसबुक कम टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड टू गो टू गोवा? जबकि आपने गोवा हॉलीडेज को कभी फेसबुक के ऊपर सर्च ही नहीं मारा. बट क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस कुकीज. फेसबुक तो एक कदम और आगे बढ़ता है. फेसबुक क्या बोलता है कि किसी यूजर ने मेरे क्या किया पता है? इसको बंद कर दिया. फेसबुक के टैब को बंद कर दिया, उसके ऊपर और कोई टैब ओपन किया. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. बट डिड यू चेंज और डिड यू व्हाट यू कैन से क्लोज द ब्राउज़र? नो, राइट? एंड देयर इज द कुकी. If we open another browser then? तो और कोई डेटा लेके जाएगा ना. और के ब्राउज़र में जाके आप क्या एक्टिविटी करोगे? जीमेल, तो जीमेल डेटा लेके जाएगा. गूगल ओपन किया तो गूगल डेटा लेके जाएगा. सी इसके लिए बोलता हूं टेंशन लेने का नहीं. फेसबुक लेके जा रहा है तो ऐसे नहीं होता. फेसबुक से बचने के लिए मैं क्या ओपन करूं? इंडिया में हम लोग खुद का कुछ है ही नहीं, तो फिर हम लोग को क्या टेंशन लेने की जरूरत है? सी आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. यू डोंट नीड टू वरी ओनली व्हेन समबडी इज टेकिंग आउट योर अकाउंट. सब लोग लेके जा रहे हैं, टेकिंग गुड. सर सॉल्यूशन इज यू नो व्हाट वेरी सिंपल. बिकॉज़ इंडिया में अपना खुद का कुछ है ही नहीं. वेरी सॉरी टू से दिस. हम लोग अपना खुद का हार्डवेयर तक नहीं बना पा रहे. हम लोग अपना खुद का माइक्रोचिप या मेमोरी कार्ड नहीं बना पा रहे. स्क्रीन कार्ड तक नहीं बना पा रहे. कीबोर्ड तक नहीं बना पा रहे. माउस तक अपना खुद का नहीं बनता. तो i3 और एप्पल के कंप्यूटर कब बनाएंगे पता नहीं. चाइना इज द किंग ऑफ हार्डवेयर. कोई भी नया कुछ भी बनना होगा ना, चाइना बना के देगा. एप्पल है ना, एप्पल मैं दिखता हूँ एप्पल यूज कर रहा हूँ, बट किधर बना पता है? मेड इन चाइना. माइक्रोमैक्स इंडिया की कंपनी है बट मेड इन चाइना. चाइना इज द किंग ऑफ हार्डवेयर. यूएस इज द किंग ऑफ सॉफ्टवेयर. कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा ना, हमेशा यूएस ही लेके आने वाला है. आप मार्क करो, विंडोज यूएस का है, एप्पल यूएस का है, एंड्रॉइड जो है वो भी यूएस का है. क्लाउड बोलो, सिस्टम बोलो, गूगल बोलो, याहू बोलो, आउटपुट बोलो, ट्विटर बोलो, कुछ भी बोलोगे ना, हमेशा यूएस लेके आएगा. चाइना द किंग ऑफ हार्डवेयर, यूएस द किंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंडिया द किंग ऑफ I was about to say data, but we can say yes. See, तो इंडिया इज द किंग ऑफ डेटा. मतलब क्या 100 करोड़ आबादी वाला आपको डेटा किधर मिलने वाला है? किधर नहीं मिल सकता, वो भी फ्री में. ऐसा कोई फ्री में देने वाला नहीं है. दैट इज व्हाई इफ यू आर चाइना हैज टोटली ब्लॉक्ड फेसबुक. यू कैन नॉट ओपन फेसबुक इन चाइना. यू कैन नॉट ओपन व्हाट्सएप इन चाइना. यू कैन नॉट इवन ओपन गूगल इन चाइना. बट वन little exercise which I would request all of you to pass it on as a part of being society, because this kind of cases we are getting a lot. What I request, I conduct a lot of this seminar at schools and college level also. Particularly when I go to a girls' college, or whenever I go, even in corporate seminar I am telling this. I request every girl to do this exercise. Those are very fond of putting on all the selfies and photos and everything like that. I request all the girls to go on to Google, okay, and write their name. I am just writing one name. Just write your name, comma Mumbai. I hope you understand it. Just write your name, comma Mumbai. What do you think Google will give you?
It will give a lot of information which you can possibly not imagine. But I'm not interested in all this. As for Google, this is all search. Can you see this over here? All the major media images. I periodically ask all the girls to go over there and click on images and then see how many of your photos have gone public. कि आपके कितने photos publicly available है? You have to search up to minimum 5 to 10 pages below. I hope you understanding. आपके नाम अकेला नाम नहीं होगा इंडिया में. आपको कम से कम 5 से 10 पेज तक नीचे जाना पड़ेगा. All of these photos should be part of your Facebook, your LinkedIn, your Hotmail, your Twitter, your Picasa, your Instagram, your Flickr. All of these legitimate social media websites. None of the photos, and I repeat, none of the photos should be part of any dating website, any pornographic website या उल्टे सीधे blogspot पे कभी भी दिखना नहीं चाहिए. पता कैसे चलने का कि गूगल को अपना फोटो कहाँ से मिला है? सपोज अगर आपका फोटो दिखा, you click on one of the photos, राइट हैंड साइड में तो लिखा है गूगल में टेल यू कि आपको ये इमेज कहाँ से मिल रहा है. Can you see this over here? I hope you understanding. मैं आपको इमेज डालता हूँ. Can you see this over here? I hope you understanding what I'm trying to say over here. Now, in case if your image is found on some unknown websites, I'm very sorry to say this. बाकी सब उनकी सभी वेबसाइट से भी आपके फोटोज उठाए ही होंगे. पक्का यकीन के साथ मैं आपको बोल देता हूँ. अभी ये तो unknown website दिखती है ना. Unknown blogspot is not a very popular blogspot or something like that. अभी पता कैसे चलने का कि अब ये फोटो कितने वेबसाइट के ऊपर डाला गया है. तो Google और एक ऑप्शन देता है सीधे सर्च बाय इमेज. Can you see this? Once you click on search by image, अब Google बताएगा कि ये वाला फोटो. Now you'll be very surprised to see photo is the same. I hope you understand it. Now look at the websites below. I hope you understand the effect of this particular thing itself. The photo remains the same, but it has now been uploaded on what? Multiple unknown blogspots, websites, and everything like that. The repercussions of this might not be known to people like you, but people like us have faced literally 15 to 18 cases like this. Just we can say 6 months back, one parent had come literally 3 o'clock in my building, almost crying. हुआ क्या था? It was a daughter's marriage. Okay, daughter had got engaged. It happened to be an arranged marriage. अभी पता नहीं रात के 11 बजे उस सामने वाले लड़के को क्या सूझा. उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि मेरी होने वाली किधर किधर है करके गूगल के ऊपर. तो उसने क्या किया, अपने होने वाले का नाम गूगल के ऊपर डाल दिया और सब इमेजेस और सब नाम आने लगे. But unfortunately, the girl's images started showing on some escort related websites. You can understand dating related websites के ऊपर नाम आने लगे. एक पे नहीं है, 6-7 पे आने लगे. तभी लड़के को लगा कि लगता है मेरे होने वाले का पार्ट टाइम में साइड बिजनेस यही करके. He went and informed the parents. Parents happened to be of a little bit conservative nature. उनको लगा कि लगता है हमारे लड़के को फंसाने की ये चाल है और हम लोग बच गए. And they went 12 o'clock to the girl's house just to verify whether the girl is at her house or not. और इतना बवाल मचाया था बिल्डिंग के अंदर कि वो 3 बजे पेरेंट आके क्या बोल रहे थे कि सर 15-20 साल लग गए थे पूरा रिजल्ट कमाने के लिए. आज बेटी के थोड़े बहुत फोटोज क्या उल्टी सीधी वेबसाइट के ऊपर दिख के रख के ना पूरी बिल्डिंग में आज इतनी बेइज्जती हो चुकी है ना कि शायद आज बॉम्बे छोड़ के इंडिया के किसी ऐसे कोने में जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई हम लोग को पहचाना भी ना. See, because you don't realize, just as sir was also rightly pointing out, nothing goes out of your digital. It's like a digital stamp. You know, you put it up over there, और आपको लगे आपने डिलीट मार दिया, but किधर ना किधर उसका ट्रेस तो रहेगा. And we come from this side of this particular thing itself. Literally have a lot of cybercrime departments, government departments, ATS, NIA. You will not believe. Just take 1 month, 2 months back also. If you remember, 17-year-old girl has been captured by ATS because she was about to go to where? Syria. Just for that reason, and we don't believe it was really very shocking to see 17-year-old girl being brainwashed and been going over there itself. And I generally tell all the girls on the face of, usually school में जिधर भी कॉलेज में जाता हूँ मैं तो बिंदास मुंह के ऊपर बोल देता हूँ. If you, no matter how good your relationship is, never allow any boy to take any video footage of yours. कितना भी अच्छा आपका relationship क्यों ना हो, कभी भी अगर लड़के को वीडियो मिल गया ना हाथ में, can you imagine after 5 years also he can come back to you and you are about to get married to the person of your dreams. It's not the same person of your college life, but you are going to get married. Can you imagine what kind of a chaos you can come and create in your own life over there itself? That is what we intend to tell. And also see, we work with a lot of counselors because our job is to help them. But after that, with the counseling, after that to find the legal implications and everything like that. So that is why we request committees like yours, NGOs like yours. Because right now also I'm having 3 cases. Now one of the girl is saying,
sir, my mom is telling me to go to a person who is about to do some good magic and heal me up and everything like that, but he wants my photos in a semi-nude position or something like that. My mom is brainwashed. Now, what can people like us do? And he said, what if he happens to misuse this kind of a thing? So that is where we tie up with, few NGOs, few, you can say lawyers or few people, because my job would be on the technical side and have certain limitations. And I'm very sorry to say this, a girl, even if they come to a problem like us now, they always want to prefer to talk to a girl. उन लोग ये बोलते हैं, सर आपके पास कोई फीमेल नहीं है क्या जो आपको टेक्निकली इसमें गाइड कर सके? अभी इमेजेस को निकालने होंगे, do you think the girl would take that much of a courage to come and talk to me to remove all these kind of images? Possibly no. But if a female has been found, she would be more willing to go and talk to a female and then say, could you help me out? But the other female should be technically good enough to understand this kind of a thing and help them to remove all this kind of a thing itself. Now, this is one part over here itself. Another part over here which I would like to tell. Okay, we are Indians, तो हम लोग बोलते हैं एक मुहूर्त में बहुत मानते हैं. एक शुभ काम करने का एक मुहूर्त होना चाहिए. वैसे हम लोग का हैकिंग का मुहूर्त का एक टाइम निकलता है और मुहूर्त का टाइम है रात के 11:40. It is considered as the most auspicious time to do hacking into India. As in, if you start hacking at that point of time, your success is yours. You are bound to succeed. मतलब विजय मुहूर्त टाइम उसको माना गया है. तो बोल सकते हैं क्यों? Any idea? रात के 11:40. Rumored to be one of the best muhurts to do hacking into India. Most auspicious time. See, I tell you. आपके सबके पास क्रेडिट कार्ड है. उसकी लिमिट कितनी है? 3 लाख रुपए की. एज्यूम करो. एक दिन में 3 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता हूँ? Yes. There is no stopping. डेबिट कार्ड की लिमिट कितनी होती है? जितना आपका बैंक के अंदर बैलेंस है. सेविंग्स बैंक अकाउंट में एक लिमिट आ गया है कि एक दिन में 50 रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं हो सकता. और मैं इंडियन हूँ ना, तो मैं तड़पा के पैसा निकालने में को बहुत मजा आता है. ठीक है, आपको सबको बैंक ने एक बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया होगा जिसका नाम है इंस्टा अलर्ट फैसिलिटी. इंस्टा अलर्ट फैसिलिटी मतलब क्या? जैसे बैंक में से पैसा विड्रॉ होगा ना, सबको एक एसएमएस आ जाएगा. कैसे नो? कितने लोगों के पास ऐसे फैसिलिटी? आपके मोबाइल के अंदर ना, आपके मोबाइल के अंदर कम से कम 500 से ज्यादा कांटेक्ट नंबर्स दिखेंगे. ये सुनो, 500 मोर देन कांटेक्ट नंबर बराबर. अब मेरे को एक बात बताइए, कितने लोगों के पास बैंक का नंबर है? अपने मोबाइल के अंदर बैंक का नंबर डाल के रखा है. हार्डली 3 या 4. कौन सा नंबर है? ब्रांच नंबर, लैंडलाइन नंबर. सो दिस इज द बिगेस्ट आयरनी ऑफ इंडिया. जिधर मेहनत का पैसा है उसका ही नंबर नहीं है, बाकी दुनिया भर के कांटेक्ट नंबर्स अपने मोबाइल के अंदर डाल के रखे हैं. रात के 11:40, आधे से ज्यादा लोग सो जाते होंगे. सो गए ना, फोन साइलेंट के ऊपर रखोगे ना तो किस्मत सो गई. जाग रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए किस्मत जाग रही है. रात के 11:40 पे आप सबको एक एसएमएस आएगा, 20,000 रुपीज विड्रॉ. क्या होगा? एसएमएस आ गया, लेकिन आपके पास तो बैंक का नंबर है ना, आपके पास अकाउंट नंबर है. तब क्या होगा पता है? आप पूरे खानदान को जगा दोगे. एक बेटे को उठा के बोलेंगे, बेटा अपना अकाउंट नंबर ढूंढो. दूसरे बेटे को उठा के बेटी अपना बैंक का टोल फ्री नंबर ढूंढ के दे. गूगल के साथ में जस्ट जाने फोन कर, गेट अस द बैंक टोल फ्री नंबर, गेट अस द अकाउंट नंबर. तब तक होगा 11:50 को आपको और एक एसएमएस आएगा, 20,000 रुपीज विड्रॉल, टोटल 40. तभी छोटा सा डिलीवरी सा अटैक करके आना चालू हो जाएगा. यहाँ से टोल फ्री नंबर आ चुका होगा. किसी भी बैंक के टोल फ्री नंबर के ऊपर फोन करो, क्या आएगा बताए? 1 के लिए हिंदी, 2 के लिए इंग्लिश, 3 के लिए मराठी, 4 के लिए वो, 9 के लिए वो दबाओ. तब तक आपके 12 बज गए. 12 बजते मैं दूसरा 10,000 रुपए विड्रॉ करूंगा और 12:01 व्हिच मींस न्यू बैंकिंग डे. एज पर बैंक आपकी दूसरी 50,000 रुपए की लिमिट खोल दी जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो 11:40 से लेके 12:20 तक आई कैन एंड अप विड्रॉइंग क्लोज टू 1 लाख रुपीस फ्रॉम योर हार्ड अर्न सेविंग्स अकाउंट. ये तो मैंने खाली सेविंग्स अकाउंट की बात की. मैंने बोला तड़प के लेके जाऊंगा. सोचो क्रेडिट कार्ड हाथ में आ गया तो, सोचो डेबिट कार्ड हाथ में आ गया तो, जिसमें बैलेंस पूरा हाई लेवल के ऊपर है. My first request is, when you go back home today, you have to put your bank's toll-free number inside your mobile. I hope this is very clear to all of you. These are the few things which are can be happening. और हम लोग बोलते ना, I conducted one survey. Actually, government ने मेरे को बोला था कि तो इंडिया में हैकिंग कर और फाइंड आउट कर सबसे टॉप 10 ways के इंडियन हैकिंग में फंसेंगे कैसे. टॉप 10 का टाइम नहीं है. नंबर 4 पे आता है ग्रीड, लालच, that works in India. Suppose आज मैं सबको आपको स्पेशली टू ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नारी शक्ति वुमेन लीगल एसोसिएशन को बुक माय शो से एक मेल जाएगा. एज ए पार्ट ऑफ आवर कॉर्पोरेट पॉलिसी वी आर ऑफरिंग 3 paid 3 मूवी टिकट फ्री टू ऑल द मेंबर्स ऑफ स्वयं ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू डू? इंडिया में कुछ भी फ्री में दोगे ना, एक बार पब्लिक आएगा. हाउ विल यू पे फॉर दैट मूवी टिकट?
नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। मैं इंडिया में बस शरीफ छोड़ू, मैं एक्चुअली में आप लोग को मूवी टिकट भेज दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग कौन से टाइम पे मूवी देखने जा रहे हो, उसी टाइम पे आपका नेट बैंकिंग का इधर मूवी उतर जाएगा। क्योंकि बुक में शूट में नहीं बना हुआ है ना, वो देयर इटसेल्फ। दिस इज नोन एज व्हाट? ग्रीड, नॉलेज। ग्रीड में काम करता है ना। नंबर 3 पे आती है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब मेरे को हैकिंग का एक असाइनमेंट आता है, मेरे को पता चलता है सामने वाली जो मैन पुरुष इंसान है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी लड़की का नाम का ईमेल आईडी बनाता हूँ, सीमा शाह 92, हीना खान 94, कुछ भी ईमेल आईडी बनाओ, पीछे 92, 93, 94 डालना कंपलसरी है। बाय एज, एवरी मैन अंडरस्टैंड्स इट इज अ born in that year, 2016 साल में, मतलब 22 साल की लड़की। जब मैं उनको मेल भेजता हूँ, मैं लिखता हूँ, as per our discussion on our marriage proposal, I am sending you a few of my photos. Kindly look at them and also send me yours so we can take the matters forward. मैरिज का प्रपोजल करते हैं, उसको फोटो भेजता हूँ, अंदर लड़की के 4 फोटो भेज देते हैं। And I'm very sorry to say this. सामने वाला भले फिर अंकल क्यों ना हो, 45 years old, 50 years old, actually married with 2 kids, लेकिन उनको एक शादी का प्रपोजल जाएगा ना, ट्रस्ट मी, 4 फोटो 2 बार तो आराम से डाउनलोड करने वाले, राइट? नंबर 4 पे ग्रीड, नंबर 3 पे क्यूरियोसिटी, नंबर 2 पे फोटोग्राफी आता है, सेक्स स्टिल सेल्स इन इंडिया। अगर आज भी सनी लियोन के लेटेस्ट मूवी के फोटोज या वीडियोस किसी भी स्कूल के बच्चे लोग को भेजो या कॉलेज के लड़के लोग को भेजो, उन लोग भी हंसते खेलते आराम से डाउनलोड करती है। But tell me, number 1 way to attack into India, success ratio is among the highest। ऐसे कुछ इंडियंस को भेजोगे ना, सामने वाला फंसेगा ही फंसेगा। ऐसा क्या चीज है? तो $1 लाख लग गया करके मेल आता ना। सर ग्रीड, दैट इज पार्ट ऑफ ग्रीड। अगर आपको लॉटरी लगा है, पार्ट ऑफ ग्रीड। और क्या? नंबर 1 way to attack into India, success ratio is among the highest। 250 रुपए का मोबाइल वो आया था। 251 is again part of greed। Yes, Something it is religion। Job is at number 7, perfectly right। Disco, Tata Motors, ये वो सब में जॉब लग जाते हैं ना, वो नंबर 7। ऑडी को भी नहीं छोड़ा, BMW को भी नहीं छोड़ा, उन लोगों का भी जॉब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। But number 1 is, you know what, religion, भगवान। Fear is ranked as number 1, fear of God is still ranked as number 1। महाराष्ट्र का रिकॉर्ड है, जब भी गणपति जी आते ना, आप सबको ना लाल बाग से राजा के फोटो आएंगे और बोला गया होगा कि मेरे को 9 लोगों को फॉरवर्ड करो, तो आप 9 साल तक के लिए सुखी रहोगे, वरना 9 साल तक के लिए आपके ऊपर पनौती बैठने वाला। क्या लगता है, करोगे? नहीं। जैसे नो, पर आप लोग भूल गए कि मैं इंडिया से हूँ और मेरे को पता है आपको किस दिन के ऊपर अटैक करना होगा। सपोज एज ए पार्ट ऑफ आपका जिस दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हियरिंग है और आपने कोर्ट टेबल के ऊपर ऐसा रखा है और आप खड़े होने वाले आपका स्पीच देने के लिए, तभी आपके व्हाट्सएप के ऊपर इमेज आता है सिद्धि के साहिब का ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट रखी फोटो, फॉरवर्ड इट टू 5 people, good luck in 5 minutes और 5 years of bad luck will follow। Trust me, what we think the law is going to do। Most important case hearing is going on and she got something like this। Obviously she will take just 5 minutes, forward it to broadcast पे broadcast होते जाएगा। अरे इंजीनियरिंग का रिजल्ट आने वाला है, एसएससी का रिजल्ट आएगा जिस दिन के, जिन लोगों ने एसएससी में अप्लाई किया ना, या जिनका रिजल्ट आना, सबको मैसेज भेज दो स्टूडेंट को। क्या होगा? फॉरवर्डिंग से हैक होगा कि अपने को आया तो भी हैक होगा? नहीं, अगर आपने ओपन किया तो आप क्या है, और आपको वही मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, so just like to conclude over here itself। I'll just share my details over here just for minute। किसी का पासवर्ड कैसे निकालना हो बताओ ना। Good question। Change the password। Okay, so this is my email ID। That is the name of my company, that is my mobile number, and that is my original Facebook and LinkedIn ID। And we definitely need his number because he has taken many people's password here, right? I was about to tell this. Sachin, I must tell you mesmerized my audience with your inputs, and they were catchy words and catchy examples and much practical. I never expected this after Manish spoke that what you will be going to do it. It was totally different. You both were great today and we are thankful, the audience is thankful to you. How much time you will require to show us the phone hacking? I can show them the website, you can do it tomorrow। Okay. We are running short of time. Next Wednesday. Next moment। 2017. We don't want to wait for 1 year। Okay. Sachin, Even he should be there। let's take Sachin home then. What should I So say? you mean we should not have a Facebook account? How to block our photographs on Facebook?
Remedial action. See, point is, the thing is, if I do not scare you, then people will not look at it in a. See, if I start doing the safety tips, people will be like, oh, okay, Jimin, okay, this and that. And no, now you understood how to safeguard a debit card. Now you understood how to safeguard a credit card. Next time when you want to put in the. Sir, open a university, we will attend your lectures. So next time we'll keep it for a longer duration with me and Mahesh. I'll become the hacker and sir will become the defender. So you will become the, that way we can see, because there's a very thin line of difference. It's like the knowledge which we give. Morning We are going to sell you a knife. You can use the knife, cut vegetables, make beautiful salads. It is the same knife you can kill someone. हो नहीं सकेंगे अभी solution बता दो 11:40 को ध्यान में आओ. See, one you can say for Android I can give it to you. You can try it in the comfort of your home if you want. Basically, what you can do with your Android phones. First, phone is inside the pocket, you switch off the phone. In spite of that, I can receive a call from your number to my number. That is one. Second, phone is inside the pocket, switch off the phone. In spite of that, I can receive an SMS from your number to my number. That is two. Third, if there was a break, we could have asked two women participants to go outside the club. Both of them would go in the opposite direction. Both of them make a call to each other, and we generally request the women to go outside and talk, because when you start talking, you will really go on talking. We can ask the third participant to come over here. On his or her phone, we can intercept those two women's participants' call conversations. We can listen over here. This is known as call interception. Terminology is known as call interception. Fourth, if I make a call to you, ideally, if I make a call to you, whose number should be reflected? Yours. We can reflect somebody else's number sitting over here. We can reflect a family's number, we can reflect office's numbers. आपको लगा कॉल इसलिए किया है जबकि बात मैं करूँगा. This is known as what calls spoofing. This terminology is what calls spoofing. Fifth, how many of you have put your WhatsApp on? पिछले 2 घंटे में कितने लोगों का अपना WhatsApp चालू रखा है? मोबाइल का डेटा चालू रखा था. Excellent. तो आपको WhatsApp के इमेजेस भी आए होंगे अभी. आए थे कि नहीं आए थे? yes or no? तो अगर आप परमिशन दोगे ना तो आपके WhatsApp के इमेजेस अभी आपको बता सकता हूँ प्रोजेक्टर के ऊपर पिछले 2 घंटे वाले. अगर इमेजेस पसंद नहीं है तो आपके WhatsApp के वीडियोस भी यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर. I can understand maybe you might not give me permission to do that. the solutions are Okay, last, I'll just give you the name of this thing, sir. But can anyone tell me what is the number one curiosity for a woman? Now tell me that. On a woman's day, tell me what is the number one curiosity. Woman who is married for 3 months, 3 years or 30 years of your life. But this curiosity remains the same. What is the pura thing you are constantly worried, anxious or curious about? What is my diet? Husband, perfectly right, sir. See, selfish shopping or weight loss के अलावा one of the main prime concerns of women, even if she is married for 3 months, 3 years or 30 years, is where the husband is. And women would make 2 or 3 phone calls throughout the entire day to their husband, and vice versa. They are more interested to hear the background noise than to actually what the husband might be talking about. To give you a simple example, suppose if you catch a train from Churchgate right now, and if you call at your home and tell your wife, भाई मैं घर के लिए आ रहा हूँ, जो भी चीज़ चाहिए बोल देना मैं लेके आऊँगा. Trust me, फोन तब तक चालू रखा जाएगा जब तक ट्रेन के बैकग्राउंड में से आवाज नहीं आता ना, पुलिस स्टेशन, मरीन लाइन्स. But it should be rest assured that the train has been caught and the next station is not mरीन लाइन्स itself. I think I will just like You are giving. Don't give them ideas. Don't give them ideas. big solutions. Okay, this is the solution. Anybody who wants to see, you can make a call to your husband's phone. उनके फोन के ऊपर फोन आएगा नहीं, लेकिन उनका फोन का ना माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, and then you can listen to the conversation surrounding the phone also. We get more cases for us. We get more divorce cases then. Here it is. See, but there are legal implications of using this. Okay. But Legal implications of using this, that is we what. should install this on the other phone. Yes. See, but Our phone की आदत है. see, एक चीज इतना याद रखना, we are getting a lot of cases. The reason why अगर आपको कोई भी फोन आके गिफ्ट करेगा ना, और कुछ याद रखो ना रखो, लेकिन मेरा लेक्चर ये याद रखना कि फोन गिफ्ट लेना, because this kind of softwares are installed in very good officers' phone, very good government officers' phone, very good lawyers, very good doctors, very good chartered accountants. So if you can understand, if somebody is going to give you a phone, आपको पता है बाहर की दुनिया में कोई फोकट की चाबी नहीं मिलाता. अगर कोई आके फोन गिफ्ट करने वाला होगा, इससे पहले ये कुछ डाल के ही देगा. My point was not to teach you how to attack. My point was to only tell you that such kind of technology exists.
I hope you are understanding. You do not need to learn how to do it. You need to learn how to protect from all this kind of a thing. So अगर आपके फोन के अंदर ऐसा कुछ आता है, कोई आपको फोन गिफ्ट करेगा ना, तब जाके ये याद रखना, क्योंकि ये क्या दिखता नहीं है आपके फोन के ऊपर. I got very good people who are tied up with me. I have to go to the office. आप देखोगे ना बड़े बड़े ऑफिसर्स भी, अच्छे खासे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, पता है अच्छे खासे फोन यूज करेंगे, लेकिन स्मॉल डब्बा फोन भी यूज करते हैं. सैमसंग गुरु 1200 रुपए का डब्बा फोन लेके घूमेंगे. उनको बोले इसको हैक करके बताया, इससे हैक किया तो इससे भी डब्बा फोन लूंगा 900 रुपए का उनके नाम से. That is where they are more worried about their security. But what my intention was, what our both intention was to make it very very clear. Our point was to tell you what the technology is existing today. We don't have to become hackers like us or criminals, but understand what technology can do. Justin, I think majority of our concern with the photographs, right? Yes, ma'am. yes, solutions here. So, if you are an Android user, you are having two folders. One is photo and another is gallery. Don't ever use photos folder to save your photographs. The moment you save all your photographs or videos on that folder, it automatically gets synced with your Google account. Because by using that, you have already given permission for uploading. Google account. Pardon? We purposely give link to Google account. No, but you should not use photo folder to save your photographs. You can use gallery. That is one thing. Second, whether you like it or not, if you have WhatsApp, then you have already given permission. Whatever images, messages you are getting it or you are generating, whatever content, all are being stored on their server. Third, if your number is in Truecaller or if you have downloaded Truecaller application, my advice is delete it. You can go to Truecaller's website if you are not a Truecaller user, but if you want to remove your number from Truecaller's database, go to Truecaller's website. There you can make a request to remove your number. And there they take around 15 to 30 days to remove your number. So thereafter nobody will be able to trace your number from Truecaller. What if the number is disconnected? Disconnecting in what sense? If the number was existing on the caller, but if that number is disconnected, so that data goes off? No. In Truecaller, agreement terms says whenever you download Truecaller, you give full right to the company to access your phone book and other folders where information is stored. That means whenever you are on Wi-Fi, your entire phone book will be uploaded on their server. So that's why if somebody has stored my name as only Manish or Mr. Kenya or Advocate Kenya, so if you are having a Truecaller and you have not stored my number, you may receive name from somebody else's database. So whatever name he has stored, that name you will get. So if I want to remove my number, I have to give request on Truecaller website, and it is advisable for each and everybody to give that request if you are not a user of Truecaller. If you are a user of Truecaller, then you cannot give that request. What about One LinkedIn? How question. to block our Then you should images on not Facebook? use the Truecaller. Block. You have Facebook account? What are your privacy settings? It's on general settings or you have set yourself? Only friends. Default settings? Only friends. Only friends. Only friends. Only friends. And what about images? Images. Same, your friends, friends of friends. Yeah. So you have to change. But some of my images cannot be settings. I cannot block it. You cannot, because those images are not uploaded by you. Those images might be uploaded by your friends or somebody else. So you have no control over those images. Delete those. You cannot delete also, because you have no control. You are not the original generator of those images. How do you prove an email? How do you get an email exhibited in the evidence? That's a very good question, because as a lawyer we are more concerned with exhibiting electronic evidence. That is the need of the hour. I can give you, with regard to the photographs, there are 5 to 6 softwares where you can very well check whether that particular photograph is what or it's an original image.
as far as email is concerned, you have to hire a person who is into cyber security to authenticate that email. If the email is not signed with digital signature, if it is signed with digital signature, then no need to prove. You can straight away go to the digital signature certificate and you can prove the authenticity of the email. But under Information Technology Act, the provision is there to appointment of examination of electronic records. But sadly, there is no examiner so far appointed, and that work is being done by our forensic laboratory at Kalina, and they take normally 2 to 3 years. Cyber security personnel, where will I get for email exhibition? Not just email, any cyber security. There are few who are there. Where will I get? Or if you are having a high profile case where the good amount of money is involved, then there are companies who are into it. Like Mahindra Tech is one of the companies. So that way security companies are already there who will authenticate and certify. Their expert will come to depose in court of law. Whether we should, what is the advice, use Truecaller application or not use it? Because we get so many calls, we want to know whom we are getting called. I will advise not to use it because our courts are full with litigation. Otherwise, if you are in US, I can sue you to compromise my number in public. What about That is invasion of my privacy. internet banking? No, just we have to go to bank always. You can do internet banking, but if you are doing internet banking, then my advice is write a letter to bank that don't allow change in my profile data without consent or without written consent. Yeah, because many banks they allow change of your information, your profile information, your email ID, mobile number online. Browsing your online banking from single PC will lessen the. Yeah, provided you should have that PC fully secured. Your OS, your other softwares should be a licensed one, and you should be updating your OS regularly. If you open 2 Mozilla's then, So what will happen? in one Mozilla we open all the things. You are One just- from Facebook. You are just and- opening 2 different windows. हाँ, घर तो एक ही है, Okay, you are still active. ब्राउजर एक ही है, 2 विंडो आपने अलग अलग खोली है. Do not worry, don't worry, all the papers already gone. You have stopped us to use, See, you have stopped us to I'll use tell phone. you say friends of friends setting. Okay, I mean seriously, it is not a very secure. Anybody can add you as a friend. Can you not see your photo? And apart from that, you are not putting your only photo. You put it in a group. What happens if your same friend has put the same photo, but they have not done the privacy settings? So the photo gets uploaded to the public. So we do our own security, fair enough. But our friends in the same photo have not done it, and we have taken a photo with 3-5 sing over here. They upload it, but they might not be that much worried about the security. You can give one good advice to all your clients who are businessmen. They must be having net banking account because it is a need of the hour. Plus they must be having overdraft account. Just tell them not to link 2 accounts. That's all. Otherwise their overdraft limit will be wiped off. Thank you, Sachin and Manish. This Women's Day program would not have been successful without both of you being here. Request you to show a phone interceptions also, one of. Yeah. If they are, So already we are late, so just 5 minutes. you want me to show? Anyone? Okay, we will open 2 volunteers. Any 2 volunteers who only like to give me only a phone number. दो volunteers. No, only numbers. Awareness को नहीं partnership करेंगे. He can just sitting here, he can intercept everyone's WhatsApp, whatever going on in No, but we will not look for WhatsApp, we will not look for personal data, but just showing a call, without, no matter what phone you are using, we just show how can I misuse the number, basically. So any 2 volunteers would like to give me only a phone numbers. The phone is with you, right, ma'am? Sir. 8454 8454 0607 0607 98. 98.
Sir, I will repeat the number 8454060798. Right? One more participant. Yes, sir. 98703. Sir, the phone is with you right now. Yes. 9870. 3. Again 703. 28. Sir. Sir, repeat the number 98703-70328, right? Yeah. Is the number right? Yeah. Sir, can I know your name, please? Raja. Raja, sir. Can I know your name, please? Prosper. PROSPR. Prosper. Prosper, sir. Enter the number you want to display. Whose number have I put up? Raja. Raja, sir. Enter the number you want to call. Whose number have I put up? Mine. Prosper, sir. Who will receive the call? Prosper, sir. Whose number will be displayed? Raja, sir. I hope you understand it. If anybody of you has any grudge against any of these two gentlemen, you can make a call to Prosper, sir, right now. Your number will not be displayed. Raja, sir's number will be displayed. You utter 10 or 12 backwards of the word and then you cut the call. What will Prosper, sir, will do? Will make a call back. That time the call will not come to you. Will go back to. I hope you all understanding. Anybody wants to do this? How to do this? I will tell you. How to do this? I will tell you this. So you tell the website called Get Me a Code. So on the right hand side you get this website. Can you see this over here? Now I will request any one of you volunteers, except for Prosper sir, except for Raja sir, to dial on the first number or on the second number. Okay, every one of you will have to dial. As soon as you dial, website will ask you to enter this code followed by the hash key. Okay, but mind that this is an international number. International rate should be applicable to any person who is going to dial. 1 minute का 12 या 15 रुपए जाएगा. Disclaimer. नहीं नहीं. If you are dialing, then put it on speaker, ma'am. You are dialing. Anyone dial, please, and then put it on speaker. 12-15 रुपए जाएगा. 12-15 rupees. Disclaimer. 12-15 rupees would be gone. And if you are dialing it, ma'am, just put it on speaker, please. 682-112. Yeah. Thereafter what? 0044 Speaker. 872. Just call Speaker. and then put it on speaker, ma'am. You can bring the mic over here. Yeah, I've done it. I have insufficient balance. No, my dear sir. Very smart. 872. Call ended? Right? You want to Airtel? Airtel? Anybody else? Sir? Safe? Not safe. Airtel we have blocked through Airtel. Okay. No, Airtel we have blocked through Airtel. मतलब we requested Airtel not to dial on this particular number because मेरा भी Airtel है. So if you got any other number then dial. Any other participant also can also dial. Ma'am, the second number. She's using another SIM right now. हाँ. Eight seven two 682 111. Anybody else who's time? At the back? Or in the front? Okay, anybody else can please try except for Airtel. So your time? Yeah, he's trying. 0044 872 682 682 212. Everybody is understanding what I am about to do, or what we are about to do. We shall not Aye, sir. on this Speaker, data package also, no? Okay, it's still fine. Hi, welcome to Crazy Call, the application that rocks the world. Crazy Call is the ultimate tool for making prank calls and fooling your friends. It allows you to change your caller ID and voice. Please enter the code you got from the site, followed by the hash key. So code is 18087 hash. You can even change the voice of male to female, female to male. The system is checking your code. Please wait. At any time, you can press down to make your voice pitch higher, or A to make your voice pitch lower. We are connecting your call. Have fun. Connecting your call, have fun. Yeah, yeah. अरे आया उनका आया कॉल आया ना सर
रहा है चश्मा निकालो तो उठा लो ना कॉल। उठा लो उठा पैसा जाएगा नहीं उठा उसको लाइन में बैठो आ गया नंबर को 8454060798 Right? You got a missed call from, but we were not able to pick it up, so the call आप got. गाली दे दीजिए मुझे। Thank you, sir. Thank you very much for volunteering. Now, I would request all of you, if we are connecting the call, it is me and sir who are talking, but we are reflecting the answer's number. Now, just this common question to all of you. If I enter backwards, if I cut the call, when sir will make the call back, do you think the call will go back over there, will go back over here? Where? Go to him only, the first. Sir, it's a kind request if you can dial back on the same number, the system will be charged locally. Now it will be local, this thing. Disclaimers. Yeah. Yeah, it's got. I know. नहीं है। I know.